Good evening, everyone. Welcome to our webinar on navigating the Indian legal system, tips and tricks for trial courts, tribunals, high courts, and Supreme Court of India. I am Advocate Shruti Kriti, and it's my pleasure to introduce today's esteemed speaker, Advocate Jayprakash Somani. Advocate Somani is a renowned advocate of the Supreme Court of India with 38 plus years of experience. He is a certified insolvency professional, independent director, and author of 65 plus books on Supreme Court case laws. We are honored to have him share his expertise with us. The webinar is being conducted by Vidhik Sahayata, an organization dedicated to providing accessible legal aid and education. And now, let's hear from the CEO of Vidhik Sahayata, Advocate Priya Thakur, as she shares a few inspiring words about our powerhouse speaker, Advocate Jayprakash Somani. Over to you, Advocate Priya ma'am. Thank you. Hello everyone, I am Priya Thakur, CEO of Vidhik Sahayata. As we all know that we are on path of giving a beautiful journey of advocacy. And the thing is ki if we have some expertise and if we have some people like Somani said, our journey will be very easy to become pioneer. That's why we asked him just to give some insights of tips and tricks on the navigation system, on the legal system as well. That's why he is here. And I will suggest when I started this journey, he was the only person who's he if he presents there, I'm 100% sure that I will win that matters. That's why it's my guarantee that if Somani sir holds your hands, you will be definitely going to win. So please concentrate whatever he speaks and ask him whenever you want to ask any questions. And it will be very beneficial for all of us. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words and uh, good motivation also. Yes, sir. Yes, yeah. Because this session we are recording and we are putting that session later on our YouTube channel also. So Hmm. all mics are muted. Everybody's mics are muted. So if Hmm. anybody wants to ask the question, just put that in chat box. And Shruti, you note down that questions on a piece of paper with the name of the question who is asking that question if name is available. So and at the end then Shruti will ask me that question with the name of question asking person, and then I will give the answer. But before that, I will take today's session in three parts. Okay. So all three parts block I have developed that block, and gradually within next week or next to next weeks I will publish that block also on today's session. So just give me a few seconds to share my screen. Yes. Yes. Now screen is visible to you. Oh, drive in PNLC Vidhik Sahayata. And this is navigating Indian legal system tips and tricks. This is today's. So I have developed these three blocks. First, I will give the information on procedure and protocol of Indian courts with trial court, tribunal, high court, and Supreme Court. After that, I will give presentation on effective strategies for legal research and drafting in trial court, tribunal, high court, and Supreme Court. And then lastly, I will give the information on tips on navigating Indian legal system with trial court, tribunal, high court, and Supreme Court. Okay. This is the Lord Krishna's grace on me. I have the experience of all these courts. I have initially started practice in trial court, then shifted to tribunal also, Sestat Tribunal Bombay. I'm life member of that Bar Association of Sestat, which controls the Central Excise
uh, appellate tribunal, central excise, customs, all foreign trade matters are covered in that tribunal. And then later I shifted my practice to High Court, and in from 2018 onwards, I shifted my practice to Supreme Court. So I have the practical touch of all these places. So that will be a grace of Lord Krishna on me. So let me open first blog. I have written these blogs. Court procedure and protocols of Indian courts. Okay. So I will explain you in these four different paras: trial court, tribunal, high court, and Supreme Court of India. First, I will give you introduction. The Indian judicial system is governed by well-defined procedural law and courtroom protocols designed to ensure ये प्रोटोकॉल है या कोर्टरूम प्रोटोकॉल्स हैं या प्रोसीजर हैं. Why these procedure are there? Why it is needed? So for fair trial, for natural justice, judicial discipline, and uniformity in adjudication. Court procedure refers to how a case moves through the judicial system, while court protocol refers to conduct. Court protocol refers to conduct, decorum of the court, hierarchy of the positions, and etiquettes, manners observed by judges, advocates, and litigants. See, this court decorum or etiquettes protocol is not only for advocates. These protocols are for judges also, advocates also, and for litigants also. Then hierarchy of Indian courts. So Indian court majorly distributed in these four categories. First, trial court, that is called subordinate court. Second, specialized tribunals. Third, high courts, state level. A specialized tribunal, that means specialized, these are the was established for the adjudication of that particular category cases like NCLT, National Company Law Tribunal, which handles company law matters. Then ITAT, Income Tax Tribunal, SEBI tribunals are there. Labor tribunals are there. Then CAT tribunals are there, Central Administration. Then AFT, Armed Forces tribunals are there, because we are handling all these cases in Supreme Court. So tribunals are also a part of the judiciary system. Then high courts, state level, superior court is high court, which is established through the constitution. कल मैंने कोई तो भी मुझे पूछ रहा था कि ऐसी बात चल रही थी, तो जस्ट वो बोल रहा था कि मोदी अच्छा राज कर रहा है, ये कर रहा है, मोदी का राज में अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है. मैं बोला आपको बताऊं कि आप ये राज किसका है? ये ना हमारे देश में मोदी का राज है, ना हमारे देश में राष्ट्रपति मुर्मू का राज है, ना हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का भी राज है. हमारे देश में जो राज है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल ऑल. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट. हिंदू का राज नहीं है, मुसलमान का राज नहीं है, हमारे देश में राज कॉन्स्टिट्यूशन का है. सो कॉन्स्टिट्यूशन गिव द बर्थ टू हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट. So, 4 number Supreme Court of India, that is apex court. Each forum has a distinct procedure. हर का एक नखरा अलग अलग होता है. सपोज हाई कोर्ट है, जितने हाई कोर्ट में आप जाओ ना, हर हाई कोर्ट का प्रोसीजर अलग दिखेगा, थोड़ा थोड़ा अलग. They have their different procedure like that. So it is not common to practice in high court. As an arguing counsel, it is a different. But when you are filing, where you are drafting, that is a very tedious job if you work in different high courts. So every high court have a little bit different system, distinct procedures. But all operate under the constitutional umbrella
of Article 14, 21, and 39A, fairness, due process, and access to justice. Now, I will explain you Part A, trial courts, subordinated courts. So, subordinate court includes civil judge, junior, and senior division. Then judicial magistrate, JMFC. Okay. तो ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहते हैं ये जनरली क्रिमिनल केस हैंडल करता है और सिविल जज जूनियर डिवीजन सीनियर डिवीजन दे आर हैंडलिंग civil cases. But at many places, same judge is a civil judge also and JMFC also. So they are handling civil cases plus criminal cases also. Then session court and then district court. These are the trial court. Governing procedural law. सिविल केसेस अभी जो प्रोसीजर लॉ रहते हैं ना जो प्रोसीजर चलाते कोर्ट का तो विच लॉ गवर्न प्रोसीजरली टू ऑल कोर्ट्स सो सिविल केसेस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 देन कोर्ट फी एक्ट देन लिमिटेशन एक्ट 1963 criminal cases handled by code of criminal procedure now it is a BNSS 1973 now it is a BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 Indian Penal Code now it is BNS भारतीय न्याय संहिता Evidence Act now it is BNSA so all these criminal cases are covered by this procedure. Then civil trial procedure. Civil trial procedure. What is the civil court trial procedure? What exactly in trial court we have to adopt civil procedure? That is very vast and very fantastic book, civil procedure code. बहुत अच्छा है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है They have given a section separately. They have given in-schedule orders. They have given the rules properly. So if you have the mastery on CPC, then you can easily handle any civil matter. So first, institution of suit, filing of plaint with court fee and jurisdiction. Then after filing the suit, then issue of summons. Then written statement by defendant. Then replication if permitted. Then framing of issues. कोर्ट क्या करता है इश्यूज फ्रेम करता है देन प्लेंटिफ्स एविडेंस पहले प्लेंटिफ के एविडेंस होता है देन डिपेंडेंस एविडेंस देन फाइनल आर्गुमेंट देन जजमेंट एंड देन डिक्री एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री सो की प्रिंसिपल्स burden of proof adversarial system and evidence strictly as per Evidence Act. Now, which procedure we are following for criminal procedure, criminal cases? So types of trial, summons case, warrant case, sessions trial. Broad steps. 1. FIR, complaint. सो क्रिमिनल केस कभी भी स्टैंड होती है ना कोर्ट में तो ये स्टेजेस है उसके FIR कंप्लेंट देन कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट देन चार्ज देन नोटिस देन प्रोसिक्यूशन एविडेंस देन स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड C 313 CRPC देन डिफेंस एविडेंस देन आर्ग्यूमेंट्स देन जजमेंट कन्विक्शन और एक्विटल एंड देन सेंटेंस These are the steps in trial court. Courtroom protocol we should follow in trial court. For advocates, these are the protocol. Proper dress code, black coat, white shirt, and band. Then address court as Your Honor. May it please the court. Stand while addressing. जब भी आप कोर्ट को बात करेंगे तो खड़े रह के बात करना है डोंट सिट एंड डोंट टॉक एनीथिंग सो स्टैंड
हाँ, when we are doing virtual, वर्चुअल का कोई प्रोटोकॉल अभी ज्यादा निकला नहीं, लेकिन एक्चुअली खड़ा होकर ही करना चाहिए वर्चुअल में, वैसा मुझे लगता है। बिकॉज दे आर नॉट जजेस, दे आर द गॉडेस ऑफ जस्टिस। सो वी शुड ऑलवेज गिव salutation, always give the, we should bow before that particular chair. So stand while addressing, then speak only with permission. When court gives the permission, then speak only. If you want, if another lawyer is arguing and if you want to tell any point, just raise your hand. When court give permission, then speak. That protocol, if you follow now, you will be a very, very famous person in the eyes of the judges. Judges will like you. Your face value will increase in the court. Always argue convincingly. Don't argue aggressively. एग्रेसिवली आर्ग्यूमेंट वो करते हैं जिनके पास पॉइंट नहीं रहता है, चिल्ला चिल्ला के बात करते रहता है. बट दोज हु हैव द गुड पॉइंट ऑफ लॉ, प्रॉपर साइटेशंस, they will not speak loudly. They will deliver their argument in convincing way. So convincing argument should be there. I have different courses on my app. Jayprakash Somani Supreme Court app is there. So, and that app you can find all are my courses related to Supreme Court practice. Many courses, but some courses are for property matters like that. So you can find, and it's very very in reasonable rate that courses are, and lifetime access for all videos you will get that, and proper study material also you will get that. So you can access that also. So you will get a completely practical guidance how we should read the high court order, then how we can get the points, then how we should uh, prepare the substantial question of laws, then how we should make the points, then how we should draft, and then how should argue. So everything till final order, till reported judgment, everything is given in that course in practical ways. And mainly all my courses, legal courses are in English to English only. कभी कभी मैं ऐसा थोड़ा हिंदी बोल देता हूँ, क्योंकि हिंदी जब तक बोलता नहीं ना तब तक मज़ा नहीं आता यार. खाली इंग्लिश इंग्लिश बोल करते हैं ना तो कोर्ट में करते रहते हैं, कोई इशू नहीं है. बट व्हेन वी आर इन प्राइवेट प्लेटफॉर्म, सो थोड़ा बीच में हिंदी बोलते हैं तो अच्छा खुद को अच्छा लगता है कि हिंदी इज आवर मदर टंग, लाइक दैट. सो may it please the court, stand while addressing, speak only with permission. These are the etiquettes protocol for advocates. For litigants, no direct argument unless permitted. Litigants should not argue directly without permission of the court. Maintain silence and decorum. Then mobile phones switched off. For judges, control proceedings. Maintain neutrality. Neutrality is very important. Judges should not be prejudiced. If prejudiced judge is there, then he will not give the justice properly. So maintain neutrality. Ensure fair opportunity to both the sides. Now part B, tribunals. These are the quasi-judicial bodies. For example, NCLT, NCLAT. NCLAT is an appellate tribunal. CAT, Central Administrative Tribunal. ITAT, Income Tax Appellate Tribunal. DRT, Debt Recovery Tribunal. DRAT, Debt Recovery Appellate Tribunal. Consumer Commissions. That is consumer courts. Then labor and industrial tribunals. Nature of tribunal proceedings. Specialized forum. These tribunals are specialized for that particular category. Less formal than courts. So they are, tribunals are little bit less formal than regular courts. Focus on speed, expertise, and technical adjudication. So always in tribunal, one technical member is also there. Some judicial member are there, some technical members are there. So technically adjudication tribunal can do.
Then governing laws to tribunal, tribunal specific acts, principles of natural justice, limited application of CPC and CRPC. Example, NCLT, Companies Act, IBC. So NCLT handles the Company Act, IBC matters. DRT handles RDD, BFI Act and Surface Act. You will find all the videos on my YouTube channel. कंपनी एक्ट के बारे में वीडियो देखेंगे आप मेरा आईपीसी के बारे में देखेंगे आरडीबी बीएफआई के एक्ट अभी अभी हुआ है कॉर्पोरेट लॉ महोत्सव सो सरफाइसी एक्ट दीज आर वेरी फंटास्टिक एक्ट if you are interested in corporate law you will get the interest in that and I have developed separate blog on this. And gradually we are publishing that blog on my website, jayprakashsomani.com and Supreme Court lawfirm.com. The two websites we have. Procedure in tribunal. What procedure tribunal we are following? Filing of application, that is petition. Issuance of notice. Application file करने के बाद issue notice. Then reply of the opposite party. Then we are giving rejoinders if necessary. Then interim applications if they are IAs. Then final hearing. Then order and judgment. Key feature, affidavit-based pleadings, short oral arguments, limited adjournments, and emphasis on timelines. Tribunal protocol, address presiding officer as an honorable member. ट्राइब्यूनल में कभी भी आर्ग्यू करते समय ऑनरेबल मेंबर ऐसा आर्ग्यू कर सकते हैं लेकिन आप मिलॉर्ड बोलेंगे तो भी चलता है कोई इशू नहीं है या अभी मैं तो करता नहीं अभी सुप्रीम कोर्ट में ही काम करता हूं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में शुरू में सुप्रीम कोर्ट व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट इन 2018 दैट टाइम I regularly appear in NCLT and NCALT also, and sometimes in NCDRC also. So I always use your lordship there also. तो योर लॉर्डशिप सुप्रीम कोर्ट में चलता है तो मैं हर जगह पे यूज करता हूँ तो वो जज को भी अच्छा लगता है कोई इशू नहीं है लेकिन प्रोटोकॉल का बोलता है कि व्हेन यू आर एड्रेसिंग टू द ट्रिब्यूनल यू शुड एड्रेस एज अ ऑनरेबल मेंबर लेस रिजिड डिजिट कोड ब्लैक कोड जनरली फॉलोड strict compliance with statutory timelines, frequent use of video conferencing. तो ट्राइब्यूनल में मैक्सिमम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्यादा कोर्ट चलते हैं. I'm insolvency professional. I am handling some matters as a liquidator, some matters as IRP, RP. So my advocates are always arguing online in NCLT. So NCLT, NCALT, all are online courts. हाँ फिजिकली भी जा सकते हैं वहां पे, नो इशू. बट स्टार्टिंग ऑनलाइन सिस्टम ये NCLT में आया. Then NCALT adopted that. And then during COVID, before COVID, they have adopted online system. But after COVID, during the COVID, Supreme Court and High Court adopted that. And now all court are adopting, at least High Courts, Tribunals and Supreme Court. But lower court should adopt that, all that thing. So speedy justice will be there. So part C, High Courts of India. Constitutional position. Because High Court has established through the constitutions, Article 214 to 231. Courts of records. High courts are courts of record. Supervisory and constitutional jurisdiction. Then jurisdiction of high courts. High court have original jurisdiction, then appellate jurisdiction, then writ jurisdiction, Article 226, then supervisory jurisdiction, Article 227, then contempt jurisdiction. Procedure in high courts. In high court, we have to adopt this procedure. Appeals, filing appeals. We are filing appeals, writ petitions, civil criminal revisions, company appeals, tribunal appeals. Then process, filing and scrutiny, then listing before appropriate bench, then admission hearing, then notice interim orders,
then final hearing, and then judgment. But it is very easy to admit matter in High Court than Supreme Court. Supreme Court is very choosy because of Article 136. Hmm. Then writ procedure, Article 226. No read CPC procedure in writ matters. Affidavit based relief mandamus centrary prohibition, habeas corpus, and Q warrant. Then discretionary jurisdiction. High Court protocol and etiquettes. Black coat mandatory. In some High Court, gowns are also mandatory. Address as my lord and my lady. Stand when bench enters. No interruption of bench. Court craft. Concise argument. Citation discipline. Strict time management. Now part D of this particular block. Supreme Court of India. Constitution status, Article 124 to 147. This is the apex court of the land, final interpreter of the Constitution. Jurisdictions of Supreme Court. You will find my separate video on Supreme Court, different jurisdictions. And one common video is also jurisdiction of Supreme Court. You will find more than 500 videos on my YouTube channel. So many videos are there. That is my hobby. बस अभी थोड़ा टाइम कम मिलता है तो भी करते जितना भी हो सकता है करते हैं बिकॉज प्रैक्टिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे। बहुत पूरा भारत का ऐसा एक भी स्टेट नहीं जहाँ का मैटर हमारे पास नहीं है। तमिलनाडु से आता है, हैदराबाद से आता है, उधर से अंडमान निकोबार के मैटर्स हैं, सब तरफ के मैटर आते हैं। So jurisdiction of Supreme Court, original jurisdiction, Article 131. Suppose there is a dispute between two state government, Maharashtra state government and Gujarat state government. So jurisdiction is Supreme Court. So if a dispute is between one state and union, original jurisdiction is there, Article 131. Appellate jurisdiction, regular appeal after High Court or after appellate tribunal, Supreme Court regular appeal, that is appellate jurisdiction. Special leave petitions, Article 136. Article 136 के ऊपर भी काफी मेरे वीडियोस है SLP के ऊपर. Special leave petition. When High Court is not giving the certificate for appeal, that time you can file the appeal under this Article 136. But they have the inherent power, some power. Without any reason, they can dismiss the matter. And under Article 136. So substantial question of law should be there. You should not discuss on fact in Supreme Court. You should discuss on the substantial question of laws. What exactly High Court has not considered. You should mention that particular section, that particular law, and what is your exactly argument on that. If you put that, within a 2-minute or 3-minute, court will accept that. And if you are arguing more, even though they will dismiss it. So more argument, less argument is not matter in Supreme Court. Matter only your quality of argument and substance in your speech, in your argument. Then read jurisdiction, Article 32. Read jurisdiction, Supreme Court read jurisdiction is very narrow. It is related to only fundamental rights. But High Court read jurisdiction is a very large. They are entertaining fundamental right matter also, and they are entertaining legal right matter also. So Article 226 and 227, two articles are there for High Court. So always file writ petition in High Court first and then come in Supreme Court. This is my advice. But when national importance matter is there, that time you can directly evoke Article 32 to file the writ petition in Supreme Court. Advisory jurisdiction, Article 143. So in under Article 142, a President of India can ask the advice from the Supreme Court. So when Supreme Court gives the advice, it is not mandatory on President to accept that advice. This is also law. Review and curative jurisdiction.
So you will find my different videos on review petition, creative. What is review petition, creative petition? When SLP, special leave petition, or appeal get dismissed, or it is adjudicated properly, but aggrieved party is not agree on that. So they can challenge that order in Supreme Court in review petition within 30 days. And after dismissing review petition, curative petition is the last option in Supreme Court. Less chances are there, but when you are good in drafting, when you are good in argument, that time it is possible. We have open curative. Tomorrow is my argument before Chief Justice of India on my curative petition, which open in curative petition one matter in curative petition. In last month, I argue in my review petition. Review petition, we open in review petition. SLP was dismissed. We open in review petition as SLP, and we got 10 lakh rupees compensation to our client. Earlier, Supreme Court has dismissed that SLP, but later in review petition, that is depend upon your skill, friends. So then Supreme Court procedure, governing law, Supreme Court rules 2013, and Supreme Court procedure, law and procedure 2017 also there. Then constitutional provisions, filing matters, SLP, civil, criminal, then civil appeals, then criminal appeals, then writ petition, then transfer petitions. Process, filing and registry scrutiny, then listing before appropriate bench, then admission notice, then interim orders, then final argument, then judgments. Special leave petitions, SLP, discretionary jurisdiction. SLP is discretionary jurisdiction, not a matter of right. Court intervenes only in case of grave injustice, substantial question of law, constitutional importance. इसलिए मेरा एक वीडियो है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा एसएलपी डिसमिस क्यों होती है, व्हाई, ऐसे उसके ऊपर देन आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन ऑन दैट. सम जनरल पब्लिक के लिए जो वीडियो रहते हैं ना मेरे, वो मैं हिंदी में करता हूँ, और दोज वीडियोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट और लॉयर्स, सो दैट वीडियो वी आर गिविंग इन इंग्लिश ओनली. तो अब ये लॉयर का या इनके पार्ट का लॉ स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम है, सो आई एम डिलीवरिंग दिस इन इंग्लिश. सुप्रीम कोर्ट प्रोटोकॉल एंड डेकोरम फॉर एडवोकेट्स, स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, that is our black coat, then gown, white shirt, band, black pant also we are wearing here. Address as your lordship, but you can say milord also in Supreme Court, my lady also, my ladyship. When you are saying your lordship to male judge, to female judge, you can say your ladyship. बट यार ये याद नहीं रहता मुझे, तो मैं तो नागरत्ना मैडम के सामने भी योर लॉर्डशिप ही बोलता हूँ. सो योर लॉर्डशिप बोलने के बाद सबको अच्छा लगता है, तो कोई इशू नहीं है. हाँ, तो लेडीशिप बोलते समय वो याद नहीं रखता, और उसमें भी एक अगर जेंट्स एंड एक लेडीज है ना, तो फिर लेडीशिप बोलना या बोलना, बिकॉज ऑलवेज आर्गूमेंट जो होते हैं तो मोस्टली हमारे डबल बेंच, 3 बेंच, 5 बेंच, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच क्यों अलग अलग है, वाई. You will find one my video for AORs, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर, बड़ा लंबा 2 घंटे का वीडियो है वो, आप देख लीजिए. सो यू विल फाइंड ऑल दिस मैटर इन दैट. आई एम नॉट AOR, बट with the grace of Lord Krishna, I have published 3 to 4 books on AOR preparation. So all books are available on Flipkart and Amazon also. Supreme Court protocol decorum. Okay. Address your lordship, then speak only with permission, then extremely time-bound argument. So your argument should be very precise. Then court conduct, no unnecessary adjournment, written submission encouraged, seniority respected. Common court protocols across all courts, judicial discipline, respect for hierarchy, binding precedent doctrine, natural justice, audi alteram padram. That means you right of hearing, right to hear, audi alteram pardon. Then reason orders. Then court etiquette, no argument outside pleadings,
no personal remarks, professional conduct. Use of technology, e-filing, virtual hearing, digital records. Now I have given here comparative snapshot. So forum, procedure, formality, and speed. So in trial court, procedure is covered by CPC, CRPC, formality high and speed moderate. तो ट्रायल कोर्ट में फॉर्मेलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन, स्पीड थोड़ा मॉडरेट ठीक ठाक चलता है. इन ट्राइब्यूनल्स स्पेसिफिक स्टैट्यूट स्पेसिफाइड, जैसा कि आईबीसी है, कंपनी लॉ है, ये एनसीएलटी में चलता है, लाइक दैट. फॉर्मेलिटी मीडियम बट स्पीड फास्टर. हाई कोर्ट प्रोसीजर मिक्स्ड, फॉर्मेलिटी हाई and speed moderate. In Supreme Court, procedure constitutional, very high formality and speed selective. Now, conclusion. The code procedure and protocol in India reflect a balance between rule of law, judicial discipline, fairness, and efficiency. While procedures become more structured and formal as one moves up the judicial hierarchy, the underlying principle remain constant: justice, equity, and constitutional supremacy. Understanding these procedures and protocol is essential for advocates, litigants, corporate entities, law students, and judicial aspirants. So I have covered first part. I have to speed up because Shruti have given only 1 hour, and 1 hour so we have completed only for first presentation. So bear with me. I will complete all these three presentation, even though 1 more hour required. No issue from my side. You also stay with me. Then see how effective strategies for legal search. Effective strategy for legal search and drafting. So I have elaborated the drafting and research in all these 4 stages because I have practiced at all 4 stages. So research and drafting skill, we should have always a different in different level. नॉट अ कॉमन. ट्रायल कोर्ट में जो ड्राफ्टिंग का स्किल है वो नहीं चलता है आपको हाई कोर्ट्स में. हाँ, ट्रायल कोर्ट का ट्रिब्यूनल में चल सकता है, बट इट विल नॉट एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट. एंड हाई कोर्ट में जो चलता है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट हैव अ डिफरेंट सिस्टम्स. सुप्रीम कोर्ट का ड्राफ्टिंग ही अलग है. बस हमारे क्लाइंट को जब ड्राफ्ट भेजते हैं ना, तब ड्राफ्ट क्लाइंट का एक ही रिमार्क आता है कि सर एक्सीलेंट, ऐसा ड्राफ्ट हमने कभी देखा ही नहीं, कभी किया हुआ. क्योंकि हमारी टीम है 16 जूनियर्स की, मेरी एसोसिएट्स की, उसमें 6 AOR है, एंड वी आर कलेक्टिवली डूइंग दिस वेरी फंटास्टिक जॉब. बिकॉज आई केम फ्रॉम बॉम्बे. मैं बॉम्बे से आया हूँ. मेरी पूरी फैमिली पुणे में रहती है, मैं अकेला रहता हूँ दिल्ली में. सो मैं दिल्ली में जब आया हूँ पूरे भारत की सेवा के लिए, तो आई शुड डिवोट माई सेल्फ फॉर दैट पर्पस. So in these 5 to 6 years, 65 plus books we published, so many seminars, so many webinar. नानी पालकी वाला नेशनल लॉ कप के प्रोग्राम है, अलग अलग लॉ कॉलेज के प्रोग्राम होते रहते हैं मेरे, अलग अलग बार काउंसिल्स बुलाते रहते हैं. मोस्टली ऑनलाइन ही में जाता हूँ, ऑनलाइन इजी हो जाता है. फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर करते तब आई एम एक्सेप्टिंग फिजिकल इन्विटेशन आल्सो. So now see the research. This is block developed by me. Introduction. Legal research and drafting are foundation of successful advocacy. While the core principle remain constant, the depth of research and style of drafting, citation standard, and strategic focus vary significantly across judicial forums. Effective legal work required forum-specific research, precision in drafting, awareness of judicial expectations, strategic presentation of fact and law. Core principles of effective legal research, common to all courts. 1. Identify the exact legal issue. Distinguish question of fact, question of law.
and mixed question. Frame issues narrowly to avoid unnecessary research. Hierarchy of legal authorities. Constitution of India, Supreme Court judgments, jurisdictional High Court judgments, other High Court pervasive, then trial court proceedings, statute rules and regulations, commentaries and academic writings, then use of reliable research tools, SSC online, Manupatra मैं use करता हूँ. Supreme Court and High Court website have good citations. NCLT also have a good citation. NCALT also have good citation. And e-library तो फंटास्टिक है. दिल्ली हाई कोर्ट के साइट के ऊपर, बॉम्बे हाई कोर्ट के साइट के ऊपर, बट ई-लाइब्रेरी बहुत फंटास्टिक है. गवर्नमेंट गैजेट्स, लॉ कमीशन रिपोर्ट्स, केस लॉ रिलेवेंस और वॉल्यूम, रेफर रेशियो डिसेंडी और लेंदी कोटेशंस, अवॉइड ओवर साइटेशन. साइटेशन 3-4 साइटेशन चाहिए, ज्यादा साइटेशन कभी नहीं देना. बहुत सारे 14-15 साइटेशन देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. हम कितने होशियार वकील बताते हैं, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है. इट विल वेस्ट ऑफ द जुडिशियल टाइम. एंश्योर्ड फैक्चुअल सिमिलरिटी. देन कोर प्रिंसिपल इफेक्टिव लीगल ड्राफ्टिंग फॉर कॉमन. मैं पहले कॉमन दे रहा हूं, सबके लिए यूजफुल है, और फिर मैं अलग अलग कोर्ट का बताने वाला हूं आपको. देखो, बहुत रिसर्च बेस हमारा प्रोग्राम रहता है. हम हर प्रोग्राम में, मेरे कॉर्पोरेट लॉ का जो हुआ है, क्या बोलते हैं, महोत्सव, 7 दिन का महोत्सव था, ऑन द ओकेशन ऑफ 106th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ माई गुरु नानी पालकीवाला. वो मेरे गुरु नानी पालकीवाला मेरे सामने रहता है. देखना देखना, क्या मैं बताता हूँ आपको. अब देखो, ये देखो मेरा जो छोटा सा वीडियो दिख रहा है ना, बस साइड में आपको दिखेगा. देखो, ये देखो, ये मेरे नानी पालकीवाला, ये सुप्रीम कोर्ट मेरा भगवान है, मेरे सर के ऊपर ही रहता है. वो देखते रहते हैं मेरे, पता है, ठीक से अभ्यास कर, ठीक से स्टडी कर, ठीक से केस लॉ निकाल, ऐसा बोलते रहते हैं. जो ठीक करती है, मैं तो साइन भी नहीं करता कोई चीज का. साइन भी एवार कर लेते हैं. मैं खाली आर्गुमेंट का काम करता हूँ, लेकिन शुरू शुरू में सब करना पड़ता है, सब चीजें. कोर प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीगल ड्राफ्टिंग कॉमन, क्लैरिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, लॉजिकल स्ट्रक्चर, फोरम appropriate language, precision in reliefs, consistency in fact and law. A well-drafted pleading should allow the judge to write the judgment with minimal effort. So always draft for judges. Don't draft for yourself. जजेस को इजी होना चाहिए, जजेस को लेते आना चाहिए, जजेस को करते आना चाहिए. रिजॉइंडर देते हैं, काउंटर देते हैं, तो जजेस शुड गेट द फंटास्टिक मटेरियल टू पुट इन जजमेंट. बस उनको खाली कॉपी पेस्ट करने का काम रहना चाहिए, इतना तक करके देने का है. सो ड्राफ्टिंग इज अ डिफरेंट स्किल. पार्ट ए, ट्रायल कोर्ट्स, सिविल एंड क्रिमिनल. सो लीगल रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी इन ट्रायल कोर्ट. Focus areas: statutory provision, CPC, CRPC, Evidence Act. Then local amendments and High Court rules. Then binding judgment and jurisdictional high courts. Then practical approach, emphasis on facts and evidence. ट्रायल कोर्ट में फैक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है. रिसर्च ऑन प्रोसीजरल कंप्लायंस. Limited reliance on Supreme Court judgment unless directly applicable. When you are practicing trial court, you should quote the judgment of your concerned high courts. That is sufficient. But you can quote Supreme Court judgment also. Key research areas: burden of proof, limitation, maintainability, jurisdiction, and admissibility of evidence. ये 4 के ऊपर रिसर्च आपका परफेक्ट चाहिए. Burden of proof, limitation, maintainability, jurisdiction, and admissibility of evidence. Then drafting strategy in trial court. Civil pleadings. Plain and written statement must be fact-centered.
कंप्लेंट में, रिटन स्टेटमेंट में फैक्ट आना चाहिए ज्यादा. क्लियर कॉज ऑफ एक्शन. Cause of action should be clear. Specific denial, order 8 CPC. Avoid argumentative pleadings. Your pleading should not be arguments. Criminal pleadings. Complaints application must be concise. Clear narration of offense ingredients. Avoid legal verbosity. ज्यादा लीगल वर्ब है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज नहीं करना है. Some judges are using unnecessary complex languages. Some advocates are using unnecessary complex languages. वो फॉरेन में जाके पढ़ के आए हुए हैं, कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, उनके पापा सीनियर एडवोकेट थे, किसी के पापा जज थे. यू कैनॉट कंपेयर yourself to them. Think about the judges. All judges are not convent educated. All judges are not foreign written qualified persons. So use very very simple language like नानी पालके वाला जब भी आर्ग्यू करते थे ना, वेरी सिंपल इंग्लिश में करते थे. उनके बड़े बड़े स्टेडियम में प्रोग्राम होते थे. इनकम टैक्स बजट आने के बाद उनके बहुत सारे लेक्चर होते थे बड़े बड़े स्टेडियम में. 50-50 हजार, 1-1 लाख पब्लिक रहता था. JRD टाटा वगैरह सब जाते थे लेक्चर्स को. अंबानी वगैरह, धीरू भाई, इस लेक्चर को जाता था. सो दे आर नानी पालके वाले यूजिंग वेरी सिंपल लैंग्वेज. So use a simple language because every judge can understand. Lawyer can understand. You can understand. Don't use a complex language. Style simple language, short paragraphs, chronological narration, strategic drafting tips. Draft keeping issues framing in mind. Then relief clause must be executable. Avoid unnecessary case law citations. Evidence-friendly pleadings. Now, tribunals. NCLT, NCLAT, ITAT, TRT, CAT, Consumer Fora, लीगल रिसर्च स्ट्रेटेजी इन ट्राइब्यूनल्स. इतना रिसर्च बेस्ड आपको कोई वेबिनार नहीं मिलेगा, ये याद रखना. हमारा काम है ऐसे, हम जो काम करते हैं ना एक्सलेंट करते हैं. हमारे एक टीचर थे, वो हमने कभी पैसे के पीछे नहीं दौड़े, कभी नहीं, नेवर नेवर. हम जब भी वकील बने ना 1989 में, तब से आज तक हम खाली अच्छा काम करते गए, पैसा अपने आप आते गए. भारत के हर स्टेट में हमारी लगभग प्रॉपर्टी है. बड़े बड़े शहर में, दिल्ली में 3-4 प्रॉपर्टी है, बॉम्बे में 3-4 प्रॉपर्टी है, पुणे में तो 7-8 प्रॉपर्टी होगी. वो कोई इशू नहीं है. लेकिन हम पैसे के पीछे नहीं दौड़े कभी. हम खाली एक्सीलेंट काम किए, जो भी किए एक्सीलेंट करो, तो लोगों को पता चलता है. पब्लिक इज अ बेस्ट जज, योर क्लाइंट इज अ बेस्ट जज. अब बात कैसे करते क्लाइंट के साथ, कितना गुस्सा करते हैं, कितने प्यार से बात करते हैं, कितना डिस्टेंस मेंटेन करता है, क्लाइंट को समझता है. और हमारे एक टीचर थे, वो बोलते थे, मैं 8वीं में था उस समय, 8th स्टैंडर्ड में, मराठी मीडियम में था. मैं मराठी मीडियम बैकग्राउंड का हूँ. आर्गूमेंट के लिए, इसके लिए इंग्लिश बात कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है. बट आई ऑलवेज लाइक मदर टंग स्पीक. सामने वाला का हिंदी आता है तो मुझे हिंदी में बोलने में मजा आता है. हाँ, बट वेन ही स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई विल स्पीक विथ हिम इंग्लिश. इंग्लिश में पूरा दिन दिन भी बात कर सकते, कोई इशू नहीं है. तो 8वीं में जब मराठी मीडियम में था, तब हमारे टीचर मराठी में बोलते थे. एक टीचर थे, उसका नाम भी याद आएगा मुझे, हाँ, गंभीर सर. गंभीर सर. वो बोलते थे, आपको जो बनना है ना बनो, लेकिन एक्सलेंट बनो. आपको बनना है डॉक्टर तो एक्सलेंट डॉक्टर बनो, आपको इंजीनियर बनना है एक्सलेंट इंजीनियर बनो, आपको वकील बनना है एक्सलेंट वकील बनो. आप अगर गधा बनते हैं ना, गधा, तो लोगों ने बोलना चाहिए, वाह क्या गधा है, यू शुड बी अ नंबर 1 डोंकी. उस समय हम हंसते थे, लेकिन आज महसूस होता है कि सही में वो कितना सही थे. बस डोंट कॉम्पिट टू एनीबॉडी फ्रेंड, डोंट कॉम्पिट टू एनीबॉडी, यू कॉम्पिट योर सेल्फ ओनली. कल आपने कैसा स्टडी किया था, आज कैसा किया, कल कैसा आर्ग्यू किया, आज कैसा किया, कल कैसा ड्राफ्ट किया, आज कैसा किया. यू क्रॉस योर बॉर्डर्स ओनली, डोंट कंपेयर टू एनीबॉडी. उसका हाई फाई इंग्लिश है तो मेरा भी आना चाहिए, अरे वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है यार,
वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तू हिंदी मीडियम का बच्चा है, व्हाई यू आर कंपेटिंग अननेसेसरी? सब्जेक्ट मैटर्स, रिसर्च मैटर्स, नॉलेज मैटर्स. इसलिए डोंट हैव अ इंफीरियर कॉम्प्लेक्स ऑफ योर वर्नाकुलर लैंग्वेज मीडियम. डोंट हैव एनी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स. यू शुड हैव अ सुपीरियर कॉम्प्लेक्स. उल्टा तो आपको सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आना चाहिए कि मैं मातृभाषा में पढ़ा हूं, मेरा रिसर्च नॉलेज ज्यादा अच्छा है देन एनी फॉरेन लैंग्वेज. एक्सट्रीमली सॉरी, इंग्लिश इज नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज. इंग्लिश इज ए इंडियन लैंग्वेज. English is a constitutional language. Don't say English is a foreign language. वो फॉरेन से आई है वो बात अलग है, but we accepted English in constitution. So English is a constitutional language. We should know English because it is a constitutional language. So legal research strategy in tribunal. Focus area, parent statute and rules. Tribunal regulations. Tribunal precedents. Limited application of CPC principles. Supreme Court judgment and interpreting tribunal powers. Key research themes: jurisdiction of tribunals, maintainability, statutory timelines, and technical compliance. Drafting strategy in tribunals. Key features: affidavit based pleadings. वहां पे चिप क्रॉस ऐसा ज्यादा चलता नहीं है, विटनेस के लेना वगैरह ऐसे ज्यादा चलता नहीं, तो एफिडेविट बेस्ड प्लीडिंग होता है. स्ट्रक्चरल प्लीडिंग्स विथ हियरिंग, emphasis on documents. Drafting style, issue based drafting, tabular presentation where possible, bullet point for clarity. Strategic drafting tips: statutory compliance, clarity pleaded, timeline based narration, avoid emotional and rhetorical language, focus on relief without statutory framework. Now part C, High Court. अभी हाई कोर्ट में रिसर्च कैसा चाहिए, ड्राफ्टिंग स्किल कैसा चाहिए, ये बता. मैं चारों स्टेज का बता रहा हूं आपको प्रॉपरली. लीगल रिसर्च स्ट्रेटेजी इन हाई कोर्ट्स. फोकस एरिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, jurisdictional high court precedents, Supreme Court judgments, comparative judgments, other high courts. Writ matters, maintainability under Article 226, alternative remedy doctrine, locus standi, public law principles. These are important in writ matters. Then drafting strategy in high courts. Writ petitions, crisp statement of facts, very concise, clear violation of legal or fundamental right, specific prayers, supporting affidavits, appeals and revisions, identify substantial question of law, challenge errors apparent on record, avoid re-arguing facts. Advanced drafting techniques. Opening paragraph should be captured the case. Highlight jurisdictional error or illegality. Judicious use of constitutional principles. Case law synthesis instead of citation dumping. And part D, Supreme Court of India, my court. Legal research strategy in Supreme Court. Focus areas: constitutional interpretation, binding precedents, conflicting judgments, substantial question of laws, and national importance issues. SLP research focus: identify perversity or grave injustice, demonstrate failure of justice, show violation of settled law. Then drafting strategy in Supreme Court. Special leave petition, extremely concise, clear question of laws, precise grounds, minimal facts. Written submissions, issue-wise structure, ratio-based arguments, comparative jurisprudence where relevant. I think my 7 to 8 courses are there only on Supreme Court, from drafting to argument, final argument. In property matter, different course. For SLP civil, different course. For SLP criminal, different course. All are courses and very very less fee their course है. And lifetime access है आपको वीडियो का, इसका उसका स्टडी मटेरियल.
So take that benefit also. And we are developing different small courses. एक बार मैंने वेबिनार ले लिया ना तो मैं वापस वो वेबिनार नहीं लेता, लेकिन वो रिकॉर्ड करता फिर कोर्स में डाल देता, यूट्यूब पे डाल देता। यूट्यूब पे आपको कुछ कुछ वीडियो में मिल जाएंगे, बट ऑन यूट्यूब यू विल नॉट गेट द स्टडी मटेरियल। अभी ये जो स्टडी मटेरियल ना, ये स्टडी मटेरियल आपको कोर्स में मिलेगा। कोर्स में वीडियो भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। यूट्यूब पे खाली वीडियो मिलेंगे, सब नहीं मिलते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है हम यूट्यूब पे डालते हैं। यूट्यूब में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस है, और कोर्सेज में कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ जगह पे फीस भी है। Written submission, issue-wise structure, ratio-based argument, and comparative jurisprudence with relevant. Supreme Court drafting discipline, 1.1 paragraph. Avoid repetition. Respect judicial time. Relief narrowly tailored. In Supreme Court, precision matters more than persuasion. Precision matters more than persuasion. ये कंपेरेटिव चार्ट भी आपको दिया है। फोरम रिसर्च डेप्थ कितना लगता है हर फोरम में, ड्राफ्टिंग स्टाइल, what should be a drafting style in that particular forum, and case law usage. Trial court moderate. In trial court, research depth is moderate. Drafting style is fact centric. We should focus on fact in trial court. And case law usage minimal. कब होता है वहां पे केस लॉ थोड़ा? ट्राइब्यूनल्स statute centric, structured and limited. High courts research depth high, drafting style issue centric, and case law usage substantial. And Supreme Court research depth very high, बहुत ज्यादा रिसर्च लगता है सुप्रीम कोर्ट में. ड्राफ्टिंग स्टाइल प्रिसीजन सेंट्रिक, एंड केस लॉ यूसेज selective and binding. Common drafting mistakes to avoid: over citation, don't do over citation. Mixing fact with argument, don't do that. Copy paste bleeding, don't do that. Vague prayers, don't do vague prayers. Ignoring forum jurisdiction, don't do that. Now conclusion. Effective legal research and drafting demand forum sensitivity, strategic thinking, and disciplined writing. What succeeds in a trial court may fail in the Supreme Court if not adapted appropriately. ट्रायल कोर्ट में सक्सेस मिला और वही लॉयर अगर हाई कोर्ट पे आता है तो फेल जाता है, बिकॉज अलग अलग जगह के अलग है। इसलिए जिस कोर्ट में आप कंफर्टेबल है उसमें ही प्रैक्टिस करो. When you cross that particular forum to upper forum, then don't go to lower forum then, like me. मैं कभी नहीं गया. मैं ट्रायल कोर्ट से जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, मैं वापस ट्रायल कोर्ट में कभी नहीं गया. मैं ट्राइब्यूनल में आया, फिर ट्रायल कोर्ट में नहीं गया. ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट में आया, फिर मैं नीचे की कोर्ट में नहीं गया. और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया, मैं बाकी कोई कोर्ट नहीं करता हूं. बिकॉज वी कैन गेट फैमिलियर टू दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर, वी कैन गिव टू द जस्टिस एंड वी कैन फोकस. नहीं तो इधर भी जाओ उधर भी जाओ. मैं दिल्ली हाईकोर्ट में भी नहीं जाता. फंक्शन विंक्शन कुछ रहता है, दोस्त लोग बुलाते रहते, बार बार के अध्यक्ष वगैरह हमारे फ्रेंड है सब तरफ, तो बुलाते रहते, तो मैं जाता, फंक्शन के लिए जाता, बट आर्गुमेंट के लिए कभी नहीं जाता, कितना भी पैसा दो. नो, ऑनलाइन भी नहीं करता मैं हाईकोर्ट में. हाईकोर्ट नहीं, ट्राइब्यूनल नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं. माई फोकस इज ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बस. तो शांति भी मिलती है, पूरा फोकस होता है, सब कुछ होता है. सॉरी ना, थोड़े थोड़े बीच में ऐसे गप्पे मारते तो अच्छा लगता है ना थोड़ा, नहीं तो फिर मोनोटोनस हो जाता है ना भाई. हाँ, चलो. नाउ लास्ट. श्रुति मैम, अगले टाइम याद रखना 2 घंटे का टाइम रखना, 1 घंटे का नहीं रखने का. 1 घंटे में थोड़ी लेक्चर होता है यार. और सब्जेक्ट ऐसा दिया, नेविगेटिंग इंडियन लीगल सिस्टम टिप्स एंड ट्रिक्स, 1 घंटे में कैसा होगा? और देना तो डेप्थ में नॉलेज देना ना, चारों कोड का देना, ऐसा है. नाउ टिप्स ऑन नेविगेटिंग इंडियन लीगल सिस्टम विथ ट्रायल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. थोड़ा सा ये डिफरेंट है, जो ऊपर हुए हैं उससे थोड़ा सा अलग है, कुछ रिपीटिशन भी है लेकिन नहीं है. इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग दिस सिस्टम. दी थोड़ा फास्ट लेता हूं अभी. द इंडियन लीगल सिस्टम इज हायरार्किकल, प्रेसिडेंट बेस्ड,
procedure driven, rooted in constitutional supremacy. Constitution is supreme. Successful navigation depends not merely on legal knowledge, but on choosing the correct forum, understanding procedural nuances, respecting judicial hierarchy, strategic case management. Core principle for navigating any legal forum. Know your jurisdiction. First, you see the jurisdiction properly. Territorial jurisdiction, pecuniary jurisdiction in civil matters, you should see the pecuniary jurisdiction, and subject matter jurisdiction also you should look. Then choose the right remedy: suit, appeal, writ, revision, application, or SLP. Choose the right remedy. Wrong remedy, dismissal at threshold. Start में dismiss हो जाता है. Respect limitation. Limitation Act applies strictly. Delay must be properly explained. Section 5 of Limitation Act, when sufficient cause is there, then judiciary have the power to give condonation delay. But their power is a discretionary power. So delay must be properly explained. Understanding binding precedents, Supreme Court, High Court, subordinate courts, jurisdictional High Court's judgments are binding. Then part 1, navigating trial courts. Civil court, magistrate, session courts. Nature of trial court, fact-finding courts, evidence-centric, governed strictly by CPC, CRPC, and Evidence Act. Now, BNSS and BSA. Practical tips for trial courts. Focus on facts and evidence. Plead material facts only. Avoid legal argument in pleading. Ensure documentary evidence is complete. Procedural compliance is critical. Court fee, proper valuation, verified pleadings, proper summons service. आई रिमेम्बर विधि सहायता, ये जो लॉ फर्म है, इन्होंने मेरा और लॉयर स्टॉक, ऐसे दो लॉ फर्म ने मिलके मेरा एक सीरीज लिया था ड्राफ्टिंग के ऊपर. क्या सीरीज हुआ है या बाप रे, बहुत बढ़िया. And I have given my in-depth knowledge in that. All drafting from lower court, from notice to Supreme Court, curative petition, I have covered all the courts drafting. So all courts. I think मेरे ख्याल से 13-14 दिन चल रहा था वो प्रोग्राम. Case management. Many video you will find that some videos on our course app also, and some on videos on YouTube also. Case management, avoid unnecessary adjournments, keep track of procedural stats, timely filing of applications, litigate conducts in trial court, attend attend hearing regularly, respect court decorum, communicate through counsel only, maintain complete case file. Common pitfalls to avoid: over lawyering simple disputes, poor pleadings, delay in evidence, ignoring execution stage. Navigating in tribunals, Part B. NCLT, ITAT, DRT, CAT, Consumer Pura, Labor Tribunals. Nature of tribunal proceedings, specialized and technical. Speed oriented, less formal than courts. Practical tips for tribunal: statute first approach, throughout understanding of the Parent Act, strict adherence to timelines. Document driven strategy, well indexed annexures, chronological presentation, affidavit based pleadings, interim relief strategy, seek interim relief protection early, show urgency and repairable harm. Procedural etiquettes in trial courts, procedural etiquettes in tribunals, concise arguments, respect technical members, avoid emotional pleas, focus on statutory compliance. Part C. Navigating High Court. Role of High Courts, Constitutional Courts, Supervisory and Appellate Jurisdiction,
guardians of legality. Practical tips for high courts: jurisdictional strategy, ensured writ maintainability, addressed alternative remedy objections upfront, drafting and presentation, crisp facts, clear legal issues, focus on illegality, irrationality, or procedural impropriety. Code craft, prepare for short hearings. Written submission are valuable. Case law must be directly relevant. High Court litigant best practices. Respect bench composition. Be prepared for interim relief hearings. Avoid factual reappreciation in writs. Emphasize public law elements. Part D, navigating Supreme Court of India. My court, our court. Understanding Supreme Court's role. Apex Constitutional Court, Court of Precedent. As per Article 141, any judgment of Supreme Court is binding on all Court of India. So that is called Court Precedent. Discretionary jurisdiction, specifically under Article 136. Suo motu jurisdiction they have also. Practical tips for Supreme Court litigation. Choose cases carefully. Not every adverse order deserves an SLP. Focus on substantial question of law or grave injustice. Precision and brevity, minimal facts, clear question of law, narrow prayers. Written submission matter, issue-based notes, precise citations, respect judicial time. Supreme Court etiquettes and strategy, strict adherence to Supreme Court rules, no repetition, seniority protocol followed, respect judicial discretion, comparative navigation strategy. Forum, primary focus and strategy. Trial court is focusing on fact and evidence, and strategy, procedural compliance. Tribunal, primary focus on statute and speed, and technical precision strategy. High Court, primary focus on legality and rights, and strategy, jurisdictional clarity. And Supreme Court, primary focus on constitutional law, and strategy, selective intervention. So all lawyer should read CPC, BNS, BSA, Evidence Act, Limitation Act. These four regular, once in a year you should read it. Once in a year, एक बार पढ़ना, पारायण करो इसका. And if you are practicing in High Court and Supreme Court, then read Constitution also. And your procedure of Supreme Court and your procedure of High Court. So you should read this regularly. साल में एक बार पढ़ के निकालना है. इसलिए छुट्टियां रहती ना, छुट्टी में 3-3 घंटा का टाइम करो. 3-3 घंटा कंटिन्यू एक मत पढ़ो. ऐसा सीपीसी लिया तो सीपीसी पढ़ो, ऐसा कभी नहीं होता है. बोर होता है फिर वो. डोंट डू दैट. लाइक सीरियल कैसा है, तो आधे घंटे के बाद किसी सीरियल चेंज होती ना, वैसा करो. आपको सीपीसी, मैं तो 3-3 बुक एट ए टाइम पढ़ता हूँ. जैसे अभी मैंने सपोज सीपीसी लिया, बीएनएस लिया और बीएनएसएस लिया, तो मैं तीनों साथ में पढ़ूंगा. तो फिर मैं आधा घंटा ये पढ़ूंगा, उसका आधा घंटा ये पढ़ूंगा, आधा घंटा ये पढ़ूंगा. तो फिर चेंज होता है ना सब्जेक्ट आफ्टर आवर. तो 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ते तो बोर नहीं होता है. और हमारा रीडिंग तो बहुत रहता है. मिनिमम सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करने है तो यू शुड हैव अ मिनिमम हैबिट ऑफ रीडिंग 5 to 6 hours. Then you can stand in Supreme Court. And if you don't have that capacity, don't come into Supreme Court. If you want to practice in High Court, at least minimum 3 to 4 hours, you should have the reading habit. Then you can stand in High Court. And if you don't have any reading habit properly, then trial court is the best, because trial court is a fact-based course. But when you develop that reading, then you will be master in trial court also. ट्रायल कोर्ट पे भी नंबर 1 के वकील बन जाएंगे अगर रीडिंग अच्छा है. लोग नॉलेज देखते हैं आपका, और कोर्ट में नॉलेज के साथ साथ क्या लगता है, प्रेजेंटेशन स्किल.
ड्राफ्टिंग स्किल, ऐसा है. सो दिस आर माय एडवाइस. सो इंक्रीज योर स्टैमिना, इंक्रीज योर स्टैमिना, इंक्रीज योर स्टैमिना. हम तो टॉयलेट में जाते हैं ना तो भी लॉ का किताब रहता है, कमोड पे बैठते हैं तो लॉ का किताब रहता है. हम तो बॉम्बे वाले, हम तो 1 मिनट का टाइम पास नहीं करेंगे. हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस खाली टाइम को देते हैं, पैसे को नहीं देते, किसी को नहीं देते. ओनली टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. इसलिए हमको कोई फिजिकल मिलने के लिए आने वाला है ना, तो मेरी पीए बोलती है उनको कि सोमानी सर बॉम्बे साइड के हैं, वो टाइम को बहुत प्रेफरेंस देते हैं. अगर 5 मिनट पहले आएंगे तो उनको बहुत खुशी होती है. और हर क्लाइंट मेरा 5 मिनट पहले आता है. शुरू शुरू में दिल्ली का वाले देखता था, बहुत लेट आते थे, बहुत लेट आते थे. लेकिन when we develop habit like Bombay and Delhi, so they are now following. Role of advocates and litigants. Advocate must guide a client realistically, avoid frivolous litigations, uphold professional ethics. Litigants must trust legal process, be patient, provide complete instructions and documents. Technology and modern navigation. E-filing portals, virtual hearings, digital case tracking, online judgment, and cause list. Conclusion. Navigating the Indian legal system is a journey through layered procedural, judicial discipline, and constitutional value. Success lies in choosing the right forum, following the right procedure, presenting the right case, maintaining professional decorum. Understanding how each forum function transforms litigation from confusion into strategy. Friend, this is the presentation of today's subject. Very few are there. No, all are there. Near about when I started, number is something 13, 14, but now it is more than 15, 17. Good, 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 good. Uh, Shruti, I will unmute you. Then you can ask questions. Yes, you can unmute yourself. Yes, sir. So first question, want to ask Advocate Abu Bakr, what is one legal habit every citizen should develop? And yes, yes, you can. Yes, every citizen should adopt Article 51A of the Constitution. That is fundamental duties of the citizen. If Article 15A every citizen follow, तो नो लिटिगेशन विल कम इनटू द कोर्ट. सोमानी सर को भी कोर्ट छोड़ के ना धंधा करना पड़ेगा, किराना दुकान या कपड़े का दुकान करूंगा फिर मैं, अगर कोर्ट पे कोई नहीं आएगा तो. रियली, तो वी शुड फोकस ऑन दैट प्रॉपरली, कि वी शुड हैव द फंडामेंटल. नहीं तो क्या होता है, कचरे का डब्बा रहे ना, उसके बाजू में कचरा डालेंगे लेकिन कचरे के डब्बे में नहीं डालते लोग. ये प्रॉब्लम है हमारे देश में. दिल्ली में तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है क्लीननेस का. So we should have developed the habit. Good question. Next. And second question is, what message would you like to give to our participants regarding trust in the Indian justice delivery system? Indian delivery systems trust is there. थोड़ा सा डिले होता है प्रोसीजरली, बट डेफिनेटली जस्टिस मिलता है. और डिले कम करने के कुछ रास्ते हैं, कभी हम उसके ऊपर बात करेंगे. टुडे आई हैव नॉट स्पोकन विथ यू रिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट्स प्रॉपरली. सो सेपरेट सेशन अगर रखते हैं तो आई विल गिव द टिप्स ऑन आर्गुमेंट्स फ्रॉम ट्रायल कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट लाइक दैट. तो कभी अगर मौका मिला तो जरूर हम विधि सहायता के लिए ये काम करेंगे. और विधि सहायता जो भी बोलेंगे करेंगे, क्योंकि वो अच्छा काम करती है मैम, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. और वो इतनी हेल्प करती लोगों को, बहुत अच्छा है टीम उनका. और आई अप्रिशिएट रियली. So you can unmute yourself, ma'am. एक हाँ मिनट. सर, Yeah, yes. मैं बहुत ध्यान से आपके हर एक वर्ड्स को सुनी हूँ। और हाँ, जितनी बार भी आपसे मिलना होता है, चाहे वर्चुअली या पर्सनली, मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, आप उन कुछ लोगों में से जिनका हर वर्ड्स मैं इतने ध्यान से सुनती हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अभी जिन लोगों ने ये वीडियो को सुना होगा उन्हें समझ में आएगा कि आपने कितनी मेहनत की है।
5-6 आवर्स अगर कोई रोज पढ़ रहा है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड करने के लिए, इट्स वेरी इम्प्रेसिव सर। और तो आपने इतना टाइम दिया, हमें इतने अच्छे से सिखाया, और ये तो फर्स्ट डे था। मुझे पता है आप जरूर हमें आगे मौका देंगे। सर ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं आप सबको बता रही हूँ। सर ने बहुत सारे चैनल, बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं, हमारे साथ भी टाई अप करके किया है। प्लीज उसे गो थ्रू करिए। आपकी एडवोकेसी में 100% सपोर्ट मिलेगा, ये हमारे लॉ फर्म की गारंटी है। और किसी भी तरीके से आप उनसे अप्रोच करते हैं, ही विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, दैट वी आर श्योर। यस यस यस। और सभी ट्रायल कोर्ट दिल्ली में है, ट्राइब्यूनल्स हैं, सब तरफ विधि सहायता का काम करती है, और सब जगह पे विधि सहायता का काम चलता है। बहुत क्लीन मैन डिसिप्लिन काम है, बहुत सेंट्रल एक प्रॉपर प्रोसीजर है, फास्ट भी काम करती है। तो किसी को कुछ भी ज़रूरत है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग, जस्ट एक मैं उनका परिचय करके दे रहा हूँ कि कितना अच्छा वो काम कर रही है। बाकी तो बाकी भी लॉ फर्म है, बाकी एडवोकेट है, सभी एडवोकेट जो दिल्ली में वो सब अच्छी ही है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन तो भी आप ये करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, एनी थैंक यू क्वेश्चन? सो मच। हाँ, एनी क्वेश्चन श्रुति? बैलेंस? Yes, हाँ। one question from Amrish Dubey. हम्म। Now, do you believe the basic structure doctrine will continue to evolve with changing constitutional and society needs? Yes, definitely, because basic structure doctrine have the different power, and basic structure doctrine is depend upon 12 principles which Nani Palikiwala elaborated in their केशवानंद भारती जजमेंट। केशवानंद भारती में, और केशवानंद भारती के ऊपर और नानी पालकीवाला के आर्गुमेंट के ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो भी है, 2 वॉल्यूम में वीडियो है, तो वो देख लीजिए। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसा है, ऐसे अलग अलग डॉक्ट्रिन भी डेवलप होते हैं। एंड मेरा एक बुक कंपाइलेशन तैयार है, वो पब्लिश करना है कि डिफरेंट डॉक्ट्रिन के ऊपर एक किताब मैं तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि वो खाली उसमें डॉक्ट्रिन और इट्स मीनिंग ऐसा नहीं है, वो डॉक्ट्रिन कैसे तैयार हुई, कौन से केस में तैयार हुई, व्हाट इज एकदम सर्कमस्टेंसेस, ऐसा डॉक्ट्रिन का बहुत अच्छा बना है। तो हम जल्दी की जल्दी उसको भी विल पब्लिश दैट। तो डेफिनेटली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के कारण ही हमारा लोकतंत्र जो है ये आबादित है। वी प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं होती तो कॉन्स्टिट्यूशन कब का खत्म हो चुका था, और डिक्टेटरशिप यहाँ पे आ जाती है, और जैसा पाकिस्तान का हुआ वैसा ही हमारा हो जाता। लेकिन बिकॉज ऑफ ओनली कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैल्यू गिवन टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करने वाले नानी पालिका सेटल वार्ड हैं, सीके दफ्तरी है, बहुत सारे जो लॉयर है, अभी अभी हमारे फ्रेंड कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक संघवी हैं, ये सब जो भी और अच्छे लॉयर हैं, नागा मुत्तु हैं, बहुत सारे अच्छे लॉयर हैं, बराबर है। तो सब लॉयर का बहुत बड़ा योगदान ये सब चीज़ों में है। मेनली सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है, दे आर वेरी वाइज, दे आर वेरी, सब पढ़ के आते हैं, दे आर वेरी वाइज, दे आर वेरी रिसर्च बेस्ड, वो केसेस पढ़ के आते हैं, तो बहुत कम हमको आर्ग्यू करना पड़ता है। हम थोड़ा भी इधर उधर जाने लगते थे, कम टू द पॉइंट, एक्सप्लेन पॉइंट, गो ऑन दिस पेज, एक्सप्लेन दैट वगैरह ऐसे बोलते हैं। आप तो देखती है ना, आप मेरे साथ रहती है श्रुति, श्रुति इज माई एसोसिएट, और श्रुति बहुत डिवोटेड है, बहुत अच्छा काम करती है, क्लाइंट का बहुत ख्याल रखती है, सब सब कुछ अच्छा श्रुति का चलता है। चलो, नाउ Okay, ओवर so ओवर let's टू यू, start the. ओवर टू यू नाउ। Yeah, thank you. So, a heartful thank you to the team at Vidhik Sahayata for organizing this incredibly insightful webinar on navigating the Indian legal system. And we also extend to our sincerest gratitude to our esteemed speaker, Advocate Jayprakash Somani, for generously sharing his expertise and experience with us. Your words of wisdom will undoubtedly benefit us all in our future endeavors, and your efforts have truly made a difference in helping us understanding the complexity of the Indian legal landscape. A special thanks to our CEO, Advocate Priya Thakur, for leading the team at Vidhik Sahayata and making this webinar possible. Your vision and leadership are instrumental in empowering legal awareness and education. And of course, a big thank you to all the participants for joining us and making this webinar a resounding success.
Your enthusiasm and engagement are what make events like these truly special. Thank you once again, and we look forward to more such insightful webinar in the future. Thank you so much. Thank you, Thank, ma'am. Thank you. Thank you so much, sir. thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, Shruti.